Hello everyone. Today's topic is the Millikan's oil drop experiment. Now this experiment was carried out by the Robert Millikan to measure the charge on the electron. So first we will see what is the setup for this experiment. So as you can see in this picture, this is the atomizer and here we have some oil. So this atomizer will spray this oil in form of very fine droplets. Then we have two plates, one positive and one negative. Now this positive and negative charge is given by connecting these two plates through an external DC voltage source. Third system is the presence of X-rays. So X-rays are used to ionize the air in this region. And the most important one is this telescopic eyepiece. So through this telescopic eyepiece, the Millikan was able to observe the falling oil droplets. Okay, so now we'll see how this system works. So first you atomize some oil and spray it. Now the electrical field is not active. पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिव नहीं है. सो ऑयल के ड्रॉपलेट जो है यहाँ पर एक पिन होल के थ्रू नीचे गिरेंगे. व्हेन द ऑयल ड्रॉपलेट्स आर फॉलिंग डाउन, oil droplets were allowed to reach their terminal velocity. So when the oil droplets are falling down, the weight mg acts downward and the drag force, because of the air, or you can also call the upthrust of air, it acts upwards. When both forces are acting on the oil droplet, finally the velocity will become constant, and that is called terminal velocity. So using that expression of terminal velocity from the Stokes law, we can calculate the mass of each drop. Okay, so we have the mass. Second, the falling oil droplets are given negative charge. अब जब ये एक्सरे यहाँ पर हम यूज़ करते हैं तो ये एयर के मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करेगा. तो आयनाइज करने का मतलब है कि एयर के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे. अब वो इलेक्ट्रॉन ये ऑयल ड्रॉपलेट्स गेन कर लेंगे. ओके, तो हो सकता है एक ऑयल ड्रॉपलेट के पास x नंबर या n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएं. तो दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स विल गेट नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ दोज आयनाइज्ड एयर मॉलिक्यूल्स. ओके, देन अब ये ऑयल ड्रॉपलेट्स, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया बिकॉज ऑफ दे हैव एब्जॉर्ब्ड सम इलेक्ट्रॉन्स. नाउ वी स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऑन करेंगे, बिकॉज लोअर प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज, इट विल रिपेल द फॉलिंग दिस ऑयल ड्रॉपलेट्स. ओके, सो बाय एडजस्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एडजस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं. तो फर्स्ट केस विल सी when the electric field is on, top plate is positive, bottom plate is negative. Now this oil droplet downward acting force is mg plus drag. Okay, so can you think of why this drag force is now acting downward, जबकि इस केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी, drag was acting upwards? Because in this case the particle is not falling down, particle is moving upwards. Okay, drag is always opposite to the motion. तो हमने यहाँ पर इतनी strong electric field लगा दी है कि नेगेटिव रिपल्शन से जो ऑयल ड्रॉप है, it is not actually falling down but it has started going up. So when the motion is upward, the downward forces will be mg plus drag, upward will be the electrostatic force of repulsion. Okay, third case we can take k. Now because the particle was, or the oil drops were moving upward, we now reduce the electric field so that the downward forces and the upward force will just balance each other and oil drop will remain suspended in the air. At that point we can say this electric or electrostatic force
will be just equal to weight. Now because particle is not in motion, so there won't be any drag force acting here. Okay, so these are the three cases. Okay, now if the motion is downward, then the drag force will be acting upwards. So now this was the setup. So using different strengths of the electric fields and the different strength of the X-rays, Millikan repeated this experiment. तो हो सकता है कि ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब्ड हैं, तो जो चार्ज आएगा एक ऑयल ड्रॉप पे दैट विल बी n टाइम्स E. ओके, सो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो उसने फाइंडिंग्स को ऑब्जर्व किया, he observed that the Q, जो चार्ज उसने कैलकुलेट किया, that Q is always coming out to be a multiple of this value. So from there he concluded that this is the fundamental charge, because sometimes it may be twice of this value, thrice of this value, or any integral multiple. So this is the least value which is possible in this case. So this must be the charge on a fundamental negative particle, that is electron. So this is how the charge on the electron was measured by R.A. Millikan. Next we move to the Thompson's plum pudding model. Okay, so the Thompson's plum pudding model or the Thompson's model of atom, तो थॉमसन ने कहा कि एटम में पॉजिटिव चार्ज भी है, एटम में नेगेटिव चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन्स. तो उसके बेस पे उसने एक मॉडल प्रपोज किया दैट लुक्स लाइक दिस डायग्राम. सपोज एक स्फेयर हम इमेजिन करते हैं, एक स्फेयर दैट इज पॉजिटिवली चार्ज. अब स्फेयर का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज इज नॉट बिकॉज ऑफ सम पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द स्फेयर. You can assume a watermelon, and the red part basically describes the positive charge and the seeds describe the electrons. So that is the kind of model he proposed. तो उसने कहा कि एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फेयर है जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं. ओके, नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिक्स्ड, दे आर मूवेबल. ओके, दे कैन मूव, बट he did not specify in what order or in what sense they will move, कि linear motion रहेगा या circular motion रहेगा, किस तरह का motion रहेगा. He did not mention that. So this model was able to define the or explain the electrical neutrality, कि negative charge भी है और उसको balance करने के लिए positive charge भी है. But the drawbacks of this model were, first thing is considers mass to be evenly spread. तो बाद में जो फाइंडिंग्स थी, वी नाउ नो दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बट इट इज़ कंसनट्रेटेड देयर एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स. तो इस मॉडल का ड्रॉबैक था कि उसने कहा कि मास जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द एटम. सेकेंड, इट्स अ स्टैटिक मॉडल. इट डजंट टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन्स अगर मोबाइल हैं तो किस तरह से वो मूव कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज द सेकेंड ड्रॉबैक. Third thing, it could not explain the stability of an atom. Okay, so what are the forces or what is the arrangement of these particles that is maintaining the stability of the atom? So this model was finally discarded. Okay, so next we'll move to the Rutherford's nuclear model of atom. Okay, so before talking about the experimental setup, we will discuss about the background of this experiment. तो रदरफोर्ड के बारे में बात करें तो रदरफोर्ड एक फिज़िक्स प्रोफेसर थे एट द विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, एंड रदरफोर्ड वाज ऑलरेडी वर्किंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स. तो उसने डिस्कवर किया कि कुछ एलिमेंट्स जिनको आज हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं, कुछ एलिमेंट्स रेज एमिट करते हैं. ओके, सो दैट टाइम दोज वर कॉल्ड अल्फा रेज एंड बीटा रेज. तो रदरफोर्ड ने ही डिस्कवर किया कि अल्फा रेज आर एक्चुअली हीलियम 2 पॉजिटिव आयंस एंड बीटा रेज आर नथिंग बट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. अगर पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो पेनिट्रेशन पावर में
अल्फ़ा रेज की पेनिट्रेशन सबसे कम है, देन बीटा रेज, देन गामा रेज. तो अल्फ़ा रेज कैन बी स्टॉप्ड बाय जस्ट अ पेपर. Beta rays can easily pass through paper and will be stopped by a thin sheet of lead, when the gamma ray will be able to pass through considerably thick sheet of lead. तो penetration power अल्फा particles की सबसे कम है. Okay, and secondly because he was already working on the properties of the alpha particles, and alpha particles because heavier हैं compared to electrons, they are deflected by smaller angles. Okay, so these were the reasons why he used alpha particles in his experiment. तो अब एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया? एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया क्योंकि रदरफोर्ड थॉमसन्स मॉडल को प्रूव करना चाहता था कि वो करेक्ट मॉडल है कि नहीं. तो इट वॉज कैरिड आउट टू explain or to find out whether the Thompson's plum pudding model is correct or not. तो जो setup था, that is, we take a radioactive source. Okay, this is the radioactive source. We keep it in a lead box. जो alpha rays emit होंगी, these are moving with a speed of around 16,000 km per second. Okay, then we use a slit so that they are not dispersed. We maintain a coherent beam, and then a gold foil is used. So these alpha rays will strike on this gold foil. और क्योंकि इनकी penetration power बहुत अच्छी नहीं है, we need gold foil जो बहुत ही thin होनी चाहिए. So we take around 0.6 micrometer thickness gold foil. Okay, so alpha rays were able to penetrate this, and most of the alpha rays passed without any considerable deflection. और जो expected था, that was 2 degree deflection maximum. Okay, based on his calculations, उसने कहा कि अगर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिपल्शन तो मिलेगी नहीं. अब अगर अल्फा पार्टिकल यहाँ से क्रॉस करते हैं, यहाँ से क्रॉस करते हैं, कहीं से भी क्रॉस करें, पॉजिटिव चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एवरी अल्फा पार्टिकल शुड फील सेम अमाउंट ऑफ रिपल्शन. सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो डेविएशन इट शुड बी अराउंड 2 डिग्री एंड ऑलमोस्ट सेम फॉर एवरीवन. Okay, so most of the particles, they were deflected by very very small angle, and almost you can say they passed straight. Very few were deflected by some angles less than 90 degree, and few were deflected by angles greater than 90 degree, and almost 1 in 20,000 almost bounced back. Okay, so such were the observations. तो दिस सेटअप इज़ वेरी सिंपल, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ वाई ओनली गोल्ड फॉइल वॉज यूज. एल्यूमिनियम भी तो यूज़ कर सकता था, सिल्वर भी यूज़ कर सकता था, दोज आर चीप मेटल्स. सो द पॉइंट इज इट्स नॉट कि उन्होंने गोल्ड फॉइल को ही स्टार्टिंग से यूज़ किया. दे एक्सपेरिमेंटेड विद मैनी मेटल शीट्स. ओके, दे इवन एक्सपेरिमेंटेड विद माइका. सो गोल्ड के साथ जो बेस्ट प्रॉपर्टीज़ थी, it was कि gold is noble, it doesn't get oxidized in air. Okay, so that is a very good property. Second thing, gold is highly malleable. इसको हम बहुत ही thin sheets इसकी बना सकते हैं. 0.6 माइक्रोमीटर थिकनेस किसी और मेटल के साथ अचीव करना पॉसिबल नहीं उतना easily. So the nobility of the metal, inertness and malleability were the reasons why gold foil was finally chosen for the experiment. Okay, and this green ring you can see it is a zinc sulfide coated screen. अब इसका पर्पस क्या था? अब अल्फा रेज you cannot see them, so how do you know कि अल्फा रे कहाँ स्ट्राइक कर रही है, वो डिफ्लेक्ट हुई कि नहीं हुई? So it's a very funny thing for us, but the Rutherford and his assistant Geiger, they used to sit in the dark. ओके, काफ़ी उन्होंने अंधेरे में बैठ के प्रैक्टिस की, सो दैट क्योंकि जब भी अल्फ़ा रेज एक जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन पे स्ट्राइक करते हैं, देयर इज़ अ वेरी स्मॉल फ्लैश प्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड सिंटिलेशन.
तो उन्होंने पहले डार्क अंधेरे में बैठ के प्रैक्टिस की सो दैट देयर आइज बिकेम मोर सेंसिटिव एंड देन दे यूज टू काउंट द नंबर ऑफ फ्लैशेस एंड द पोजिशंस ऑफ दोज फ्लैशेस. देन दे केम टू नो कि कितने पार्टिकल्स एक बड़े एंगल से डेविएट हो रहे हैं. Okay, so this zinc sulfide coated screen is very very important in this experimental setup. So now we know what was the expected. So expected was कि उनको straight निकल जाना चाहिए alpha particles को and maximum deflection should be around 2 degrees. But observed was कि maximum straight निकल गए but very few particles were deflected by very large angles, and this observation allowed him to propose a new model of atom, and Thompson's model was proved to be wrong as per this experiment. Okay, so the observations we already gave, about 92% alpha particles passed undeflected. Some were deflected by a small angle less than 90 degree, a few were deflected by large angles greater than 90 degree, and almost 1 in 20,000, this is very important. Okay, 1 in 20,000 ऑलमोस्ट रिट्रेस्ड इट्स पाथ. तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे उसका क्या रिएक्शन था? रदरफोर्ड वंस ही सेड दैट it was quite the most incredible event that has ever happened to me in my life, and it was almost as incredible as if you fired a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it came back and hit you. So obviously 16,000 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करने वाला अल्फा पार्टिकल is almost bounced back when it strikes a 0.6 micrometer thick gold foil. Okay, so it's just like a 15-inch ka shell. It's like a missile hitting a tissue paper and bouncing back. Okay, so the conclusion he gave कि because maximum alpha particles सीधे निकल गए, मतलब उनको कोई repulsion नहीं मिली, so most of the space in an atom is hollow. This is called एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस. तो उसने बोला मैक्सिमम स्पेस जो है वो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है. एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 20,000 में से एक को इतनी रिपल्शन मिली कि इट ऑलमोस्ट रिट्रेस्ड इट्स पाथ. तो मीन्स पॉजिटिव चार्ज must be concentrated at a very very small point. That small point is called nucleus now. Okay, so positive charge and most of the mass, they are concentrated in the nucleus. Third thing, the volume of nucleus is negligibly small. कि nucleus बहुत ही छोटा है atom के comparison में. तो after the calculation, the diameter of atom is approximately 10 raised to 5 times diameter of nucleus. So the volume of atom is 10 raised to power 15 times the volume of nucleus. And electrons, उसने कहा कि electrons they revolve around the nucleus in the empty space. इस space में electrons घूम रहे हैं because of the electrostatic forces between the nucleus and the electron. Okay, so these are the conclusions. अब the point ये कि how do we know कि diameter atom is 10 raised to 5 times diameter of nucleus? This is a very important thing. So this calculation was carried out by his assistant Marsden. Okay, so the Rutherford ने उसको कहा कि suppose I give you a new model of atom, कि मान लो कि सारा पॉजिटिव चार्ज एक बहुत छोटे से स्फेयर में कंटेन्ड है और बाकी सारा जो स्पेस है दैट इज एम्प्टी. तो द डायमीटर ऑफ दिस इज d and diameter of this atom can be taken at capital D. तो उसने कहा कि अगर 20,000 में से एक इतने बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है और हमें पता है कि गोल्ड में सेंटर पे 79 पॉजिटिव चार्ज होगा और जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये d/d की रेशो क्या होनी चाहिए कि 2 पॉजिटिव चार्ज को इस 79 पॉजिटिव चार्ज से इतनी रिपल्शन मिले कि 20,000 में से एक इस एंगल पे डिफ्लेक्ट हो. So this calculation of the ratio of diameters was done by the Marsden. Okay, so I'll just rub it off. Now, तो next जो point था conclusion में, उसने कहा कि एटम के सेंटर पॉइंट पे न्यूक्लियस है. This space is called extra nuclear space and it is empty,
and electrons are revolving. So this is the electron, it is revolving around. अब घूम ही क्यों रहा है? Why it is not at rest? First thing, because center पे हमारे पास positive charge है and this is negative charge. अगर Rutherford बोलता कि electron is at rest, then because of the electrostatic attractive force, electron should fall into the nucleus. So he said कि yes, it is revolving around the nucleus. क्यों revolve कर रहा है? Because there is electrostatic force between them. So this electrostatic force is providing centripetal acceleration, okay, or it is acting as a centripetal force. So you can say the electrostatic force, that is 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square, is acting as a centripetal force, that is mv square by r. तो उसने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट इज़ जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है एंड प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट. So because both systems are comparable, that is why it is also called planetary model of atom. So we call it planetary model of atom or nuclear model of atom, because the term nucleus was coined by Rutherford. I hope we are clear about the experiment. So in the next lecture we will discuss the shortcomings or the drawbacks of the Rutherford model. Okay, thank you.